सर। जी यस। सर वो वली जवेद हमारे ग्रुप का है, उसके दोस्त के वालिद फोत हो गए हैं आज, ओके तो वो ओके वहीं ओके पे गया था ओके क्लास में। ओके ओके, ठीक है। इस तरह की बातें सिर्फ मुझे सीआर टेक्स्ट करती है, अगर ठीक है, लाजमी नहीं आप अटेंडेंस के लिए इस तरह की बात करें इसमें लेक्चर के दौरान। सीआर को बता दे अगर कोई इशू हुआ तो सीआर मुझे कन्वे कर देगा। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज लैब नंबर 9 which is verification of maximum power transfer theorem. The objective of this lab is to experimentally analyze and verify the maximum power transfer theorem. So the operators used in this lab are these, which are hardware, but we are on software and online classes. And so you can download a software called Proteus on your laptop or computer, and you can perform these experiment on that software, and you can analyze and verify the results of each experiment. Yes, Muhammad Kamran. Yes, Muhammad Kamran. If you have a question, please ask. So, class, the theory of this practical mean maximum power transfer theorem is the maximum power transfer theorem state that we can obtain the maximum external power from a source with finite internal resistance. The resistance of the load must be equal to resistance of the source as viewed from the output terminal. So this is just like a Thevenin theorem. You can say this is the somehow second form of Thevenin theorem. In this circuit, we find the Thevenin equivalent circuit, and according to this statement, the resistance of the load must be equal to the resistance of the source. So source mean V R Thevenin. Resistance of the source mean R Thevenin as viewed from the output terminal. So we remove one time RL, and from the output circuit we will find the RTH, which is Thevenin resistance, and we also find the VTH, Thevenin voltage, and then we apply R load, and that R load must be equal to RTH. Then we will get the maximum power at our load. Okay, this is basically the statement of maximum power transfer theorem. So we further explain the theorem results in maximum power transfer and not maximum efficiency if the resistance of the load is made larger than the resistance of the source. Then efficiency is higher since a higher percentage of the source power is transferred to the load, but the magnitude of load power is lower since the total circuit resistance goes up. If the load resistance is smaller than the source resistance, then most of power ends up being dissipated in the source. So in this statement, if the load resistance is smaller than the source resistance, so for example, we have uh, this is our source, this is a source resistance, and this is a point for R load. This is, we can say this is RTH. Okay, RTH, and this is voltage which is 10 volt, you can say, and this is a resistance of 100 ohm. So according to this statement,
if the load resistance is smaller than the source resistance. We if we connect a 10 ohm resistance here, 10 ohm resistance, so you can see from this circuit, this is a high resistive circuit and this is a low resistive circuit. It means the our most power dissipated on this resistance. You on other side, if you connect a 100-watt bulb here and a 10-watt bulb here, this is 100 watt, so you can say the more power used on which resistance, on this resistance. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कम ओहम की रेजिस्टेंस या कम ओहम रेजिस्टिव जो आपका लोड है वो यहाँ पे लगा है जो कि सोर्स से कम है, तो आपकी ज़्यादा पावर कहाँ कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है करंट तो सेम होगा इनमें क्योंकि सर्किट आपका इन सीरीज है. सो व्हेन करंट इज सेम, आवर पावर फार्मूला इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. P is equal to I square R. So current is same, the difference is resistance. So this power depends upon current and resistance. So if resistance of this circuit at this point is high, then the power on this side is high. तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा होगी तो हमारे पास पावर भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अगर करंट तो हमारा सेम है, सीरीज सर्किट है. अगर करंट मेरा 10 है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे मेरे पास 100 है, तो आप यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 वाट. ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पावर निकालना चाहता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई 10, 100 वाट. सो फ्रॉम this conclusion we can say the power dissipated on this resistance will be high as compared to our load resistance. So this statement basically tells if the load resistance is smaller, as this is 10 and this is 100, the source resistance mean Thevenin resistance, then most of the power ends up being dissipated in the source. तो हमारी जो पावर होगी बेसिकली वो ज़्यादा सोर्स में ही ख़त्म हो जाएगी. एंड although the total power dissipated is higher due to the lower total resistance, it turns out that the amount dissipated in the load is reduced. So दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, the theorem results in maximum power transfer and not maximum efficiency. If the resistance of the load is made larger than the resistance of the source, then efficiency is higher, since a higher percentage of the source power is transferred to the load, but the magnitude of the load power is lower since the total circuit resistance goes up. अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेट्स सी के हमारे पास अब एक सर्किट है, अब इसमें 10 ओम है और ये 100 ओम है. अब भी हमारा जो करंट है वो क्या है, सेम है. ठीक है, अब अगर मैं पावर यहां से निकालूं तो यहां से मेरे पास पावर आएगी 100 वाट और यहाँ पे आएगी 1000 वाट और यहाँ पे 100 वाट. आई स्क्वेयर आर इफ आई इज इक्वल टू 10. ठीक है, आई स्क्वेयर आप ये कह सकते हैं आई स्क्वेयर निकाल के हमारे पास आई जो करंट आया वो 10 है, 10 एम्पियर. ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय आर 100 ओम 100 वाट और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 वाट. अब यहाँ पे ये कह रहा है सिंस द हायर परसेंटेज ऑफ द सोर्स पावर इज ट्रांसफर टू द लोड. अब resistance of the load is made larger, so resistance of the load is larger than the resistance of the source. इस सोर्स से हमारे पास जो लोड की रेजिस्टेंस है विच इज हायर, देन एफिशिएंसी इज हायर. सो एफिशिएंसी जो है हमारी हाई होगी इस लोड के ऊपर क्योंकि हमारे पास पावर ज्यादा आ रही है. बट
the magnitude of the load power is lower since the total circuit resistance goes up. तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास लोअर होगा क्योंकि हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अगर आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैक्सिमम पावर को, यहाँ से आपको वो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक ग्राफ आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है, तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस इक्वल होगी आर थेवेनिन के, जहाँ पे आर एल इज इक्वल टू आर टी एच. So in this circuit you can make a graph of maximum power transfer theorem and you will show the maximum power point on that graph. ठीक है, जो बेसिक हमारा इसका फंक्शन है इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, हमने वो पॉइंट हमने निकालना है जहां पर हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। तो वो पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, वो आपने देखें, अब आपको ये पता चल गया कि हमारे पास जो पावर फार्मूला है, चले वो हम आगे देखते हैं। आगे हम चलते हैं तो ये हमारे पास एक और वी स्क्वेयर आवर आर, एक और लोड का फार्मूला है, ये भी हमारा हो सकता है आई स्क्वेयर आर से ही निकला है अगर हम आई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो वी एल आवर आर एल, तो ये भी एक हमारे पास पी लोड का फार्मूला है। सो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम गिवन है, उससे पहले मैं आपको एक और तरफ ले चलता हूँ। So maximum power transformer to maximize the power delivered to a resistive load. Consider the general case our resistive network contains independent and dependent sources. So our resistive circuit may be somehow independent sources and may be connected to some dependent sources. Our load is connected to a pair of terminal label AB. Our load resistance is connected at load side. This is from AB mean the end side where you connect the load. What value of the load resistance permit maximum power delivered to the load? So this is our circuit. Before this load we have a resistive network such like such as RTH and VTH. So RTH we calculate from a complex circuit and VTH also we can calculate from that point from AB where RL is connected. So if we calculate the power P is equal to I square R एंड इफ वी फाइंड द करंट फ्रॉम दिस सर्किट, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक थेवेनिन हमने सर्किट बनाना है, जिस तरह मैंने आपको थेवेनिन में बात की थी, हमने एक थेवेनिन सर्किट बनाना है। थेवेनिन सर्किट बनाकर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट इस तरह का सर्किट गिवन हो सकता है या इससे भी कम्प्लेक्स हो सकता है, जिस तरह हमने थोड़ी लैब में किया, यहाँ रेजिस्टेंस लग सकती है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लग सकती है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लग सकती है। तो आपने सबसे पहले इस लोड को रिमूव करना है। लोड को रिमूव करने के बाद आपने उस पॉइंट ए बी के ऊपर, इफ यू आर इन लैब, आपने प्रॉब रखनी है, मल्टीमीटर से आपने उसकी आरटीएच फाइंड करनी है और इसी पॉइंट पे आपने वीटीएच फाइंड करनी है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपके पास एक सर्किट बनेगा इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सर्किट हमारा इन सीरीज है, सो वी कैन इजीली फाइंड द पावर P is equal to I square R and we can find the I square formula. So I is equal to basically I is equal to V over R. तो इस सीरीज में हम हमारे पास दो आर है ना, तो दोनों इन सीरीज हैं, सो एड बोथ रेजिस्टेंस, जो हमारे पास आर आएगी वो टोटल रेजिस्टेंस होगी विच इज इक्वल टू आर टी एच प्लस आर एल। So I is equal to V over R, I is equal to VTH, which is this voltage V over R circuit resistance,
and these both resistance are in series, so you can add up these two, RTH plus RL. So put this I, value of I, in this formula. So P is equal to I square R. So we can say P is equal to I VTH plus RTH plus RL square. Only we put I, value of I, in this formula, multiply by RL. So this is the same formula, you can say. Now this is the final formula. You can now uh, conduct all the values by changing RL, and you will find a point where your power transfer is maximum. And we can already said we already said our power is maximum at R when RTH is equal to RL. ठीक है, अब इस फार्मूले में फॉर एग्जांपल हमारे पास आर टी एच 10 दी हुई है और आर एल हमारे पास एक वेरिएबल है। मैं आर एल को 2 से इंक्रीज करता हूँ, 2, 4 ओहम, 6 ओहम, 10 ओहम, 12 ओहम और 16 ओहम। हम इन वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आर एल यहाँ पे पुट करेंगे, वी टी एच इफ 10 ओहम। सो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 10, इसमें आपने पुट किया, लेट से ये भी 10 है RTH। अब यहाँ पे देखें, आपने चेंज करना है RL को, पहले 2 रखना है, 4 रखना है, 6 रखना है, 10 रखना है, 12 एंड 16। तो इन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आप ये अगर फाइंड करेंगे इस वैल्यू को, तो आप देखेंगे कि जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है वो किस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसमें। अच्छा, the maximum power delivered to the load is P maximum is equal to I square R, and you can say it is equal to V square into 2RL square into RL। तो आप अगर मैं इसको RL when मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम पावर मुझे कहाँ मिलेगी, when RTH is equal to RL, so we can write RTH और RL। इसको RTH को मैं RL भी लिख सकता हूँ और RL को मैं RTH भी लिख सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि RL जब मेरा RTH के इक्वल होगा तो आप RL को RTH कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो बोथ आर इक्वल, तो इट मीन वी कैन से RL is equal to RTH। So our rearrange this formula, we will get VTH into 2RL। So 5 plus 5, 10, और R plus R, RL plus RL is equal to 2RL, 2RL square multiply by RL, 1RL। Okay, so you can, if we open this square, this 2 square will become 4 and RL square. This RL square will cancel with this. This RL square will cancel with this RL. Sir, stop. So class,
If anyone have a question, please you can ask. If anyone have a question till now, you can ask. Newcomer, please send your roll number only one time in Zoom chat. अपना अपना रोल नंबर सिर्फ आपने चैट में एक बार भेज देना, जो भी नए बच्चे इंटर हुए हैं क्लास में, ठीक है। मैं वहाँ से आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा। अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? You can raise your hand. You can unmute yourself. You can ask any question. CR, where is CR? समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर हम RL की वैल्यूज चेंज करेंगे। यस, RL की वैल्यू को हम चेंज करके हम ये देखेंगे कि हमें मैक्सिमम, अब मेरे पास फार्मूला तो आ गया ना आपके पास फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। हमने I की वैल्यू निकाल रही है, ठीक है। अब I की वैल्यू जब हम उसमें चेंज करके देखेंगे RTH की वैल्यू, तो इस फार्मूले के तहत आपको पता चल जाएगा कि आपको मैक्सिमम पावर कहाँ पे मिल रही है, कौन सा लोड, किस रेजिस्टेंस का लोड आप लगाएं तो वहां पे आपको मैक्सिमम पावर उस लोड के क्रॉस मिलेगी। और सर RL हमेशा RTH के इक्वल ही आएगा? आएगा नहीं, ये हमने खुद रखना है। RL हमेशा RTH के इक्वल नहीं आएगा। हम तो वहां पे एक वेरिएबल RL की जगह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना, ठीक है। हम बेसिकली ये फाइंड कर रहे हैं कि हम कोई एक ऐसा सर्किट जहां पे मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए सिस्टम से, मैंने एक बैटरी लगाई है और मैं उस बैटरी को उसका बिल भी दे रहा हूँ, बट मुझे फुल पावर नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा बिल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊंगा कि एक ऐसा लोड अपना लगाऊंगा कि जहाँ पे मुझे वो मैक्सिमम पावर भी दे और मेरे पैसे भी मतलब पूरे हो जाए ना, ठीक है। थैंक यू। सर मीन जब RTH और RL बराबर आएंगे तो मैक्सिमम पावर तभी आएगी ना? तभी आएगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यू मस्ट डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर प्रोटियस। आपने एक तो प्रोटियस को इंस्टॉल करना है। आपने ये जो सर्किट्स हैं जो हमारी तकरीबन 9 और इसके बाद 4 मजीद रहती हैं लैब्स जो हैं, ठीक है। कम से कम हमारी शायद 3 लैब्स आई थिंक ऑन विल बी इन ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ये सर्किट कम से कम आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, अगर हार्डवेयर पे हमारे पास सहूलत नहीं है इन दिनों कोरोना की वजह से, तो आप कम से कम उन्हें सॉफ्टवेयर के ऊपर वो करें, ठीक है। तो अगर ये लैब आपसे नहीं हो सकती तो नेक्स्ट लैब यू मस्ट परफॉर्म ऑन सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म करनी है और वो वेरी सिंपल होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से भी इजी होते हैं, बट सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा होता है। और उसमें फ़ायदा आप ये नहीं कह सकते, बट उसमें आपको जो रिजल्ट्स जो चेंज हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, वो सिर्फ ये है कि आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन में आप रिजल्ट्स निकालते हैं वही रिजल्ट्स आपको सॉफ्टवेयर पे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉसेस हार्डवेयर तो सच एज है नहीं होती, इसलिए वहाँ पे कोई लॉसेस वगैरह इंक्लूड नहीं होते उसमें, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी?
So this is the maximum power delivered to the load. The formula of the load will be P maximum is equal to I square RL, VTH our 2RL, or you can say P max is equal to VTH if you know the value of VTH. So you can only make to change VTH square divided by 4RL. सो आपके पास कोई भी वैल्यू है RL की, आप उसे मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आप VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको P मैक्सिमम इस फार्मूले से मिलेगी. So if we have an example, find the value of RL for maximum power transfer to the RL. So we want to calculate the value of RL, and we have a circuit in which 360 volt is your battery value, 30 ohm resistor which is battery resistance, and 150 ohm is the second one. So if we first of all we will find the RTH. So remove this RL, find the RTH. RTH will be 170 ohm and 170 ohm RL, and VTH on this resistance you can find. First of all you will find the current, value of current, and you can find the VTH at that point. So VTH is equal to 150 over 180 multiplied by 360 into 300 volt, and RTH which is equal to, yes, RTH is not in series. You will find the RTH by shorting this point, and these two resistance will be in parallel. So 150 multiplied by 30 into 150 plus 30, which is 25 ohm. So RTH is equal to 25 ohm, VTH is equal to 300 ohm. Now you will calculate, yes, who will raise their hand? Who raised their hand? You can ask question, please. So these two, for example, if we short this point, short this, remove this, so you have a circuit like this is our resistance, second resistance, these 2 points. So these two resistance are in parallel, 30 into 50. So formula of parallel with two resistance, 150 multiplied by 30 over 150 plus 30, which is equal to 25 ohm, and VTH is equal to 150 is equal to 360 180. Sir, this is a voltage divider rule. हाँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल ये हमने लगाया हुआ है. तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से इसने किया हुआ है, या आप इसमें क्या कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं. करंट के बाद आप इसका V इक्वल टू IR यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो भी सेम 300 आपके पास आएगा. 300 मीन 300 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, विच इज़ अ हायर रेजिस्टेंस, एंड रेस्ट 60 वोल्ट ड्रॉप ऑन दिस रेजिस्टेंस. So our next slide will be like this. This is RTH and this is VTH. And now where we will get the maximum power in this circuit? This is a variable resistance, and you have a resistance from 10 ohm to 50 ohm. So when you will reach at 25 ohm, the maximum power you will get at 25 ohm if your RL value is 25 ohm. Okay. So मैं अभी मैं करता हूँ, 2 मिनट दे मुझे. ओके.
So class, we have a limit on Zoom 40 minutes. So remaining meeting time is 2:45 minutes. You will have a break of 10 minutes. Our next class will be start from 10. So you have a 20-minute break. ठीक है? ठीक है क्लास, आपके पास 20 मिनट हैं। एक दो यस सर, ठीक है ओके सर। सर। ओके सर। एक दो सर्किट्स और हैं, वो भी हम देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह 40 मिनट की दूसरी क्लास के बाद हम इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। वालेकुम सलाम। तब तक कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो मैं सीआर को ये फाइल भेज देता हूँ, आप इसको देख कर कोई क्वेश्चन हो तब तक आप अपने पास लिख लें। अस्सलाम वालेकुम।